गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, वणक्कम, प्रणाम। एंड आज का सवाल ये है, विल वेस्ट एशिया कॉन्फ्लेगरेट? क्या वेस्ट एशिया भड़क उठेगा और वहां युद्ध लगेगा? दूसरा सवाल इसके संबंधित ये है कि क्या वेस्ट एशिया के बाद और भी ये बढ़ जाएगा? राइट। इसी चीज के लिए, इसी चीज के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं हमारे साथ कर्नल अजय सिंह। कर्नल अजय Good सिंह, evening, वेलकम टू sir. शॉट वंस अगेन। Thank you, sir. Always a pleasure being on your show, and I'm looking forward to gaining from a Jugalbandi, which we always हाँ, have. करेक्ट। या Right, Colonel Ajay Singh is an excellent author, and मैं सबको बताना चाहता हूँ, he's written an article, Fears of a Wider War. इसी आर्टिकल को देखने के बाद मैंने सोचा कि आप सबके साथ वी शुड हैव अ टॉक विद हिम। इट वाज सच अ नाइस आर्टिकल ही हैज रिटन, एंड आई विल नॉट गिव मोर इंट्रोडक्शन। ही इज ऑथर एंड ही इज ऑफ कोर्स ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वगैरह तो है ही, बट फॉर द पास्ट फ्रॉम 2011 टू नाउ 12 साल से ये लिख रहे हैं। ही हैज रिटन लॉट ऑफ बुक्स। In fact, I've written a book along with him It's uh, been an honor, sir. on Ukraine and Russia-Ukraine war. And now he started writing. I'm sure, Ajay, you'll write one book shortly on this war also. It's And at that coming time, up, ask me sir. to come. And In yeah. fact, on your show, I'll announce it. It's coming up. The next book is called Ukraine, Gaza, Taiwan, the world Oh, at war. world at war. Good. Yeah, that's a good Sir, one. राइट। sir. तो आज हम देखेंगे कि वेस्ट एशिया में वॉर होगा कि नहीं, कि भड़केगा नहीं। राइट। बट इससे पहले आई गिव अ स्मॉल अपडेट कि इसराइल में क्या हो रहा है। राइट। ताकि सबको पता है। जैसे 4 दिन पहले हमने अपडेट में बताया था, इजरायली ट्रूप्स अभी क्लियर हो गया है कि 3 तरफा उन्होंने एनक्रोच किया है। एक नॉर्थर्न डायरेक्शन से, एक नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट से। जिस तरीके से ये ब्लू एरोस दिखाए गए हैं, जहां जहां इसराइल का व्हीकल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स वगैरह दिखाए गए हैं, वो ब्लैक डॉट्स में दिखाए गए हैं। आई वुडंट से इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज द वन इन द सेंटर। आप देखिए, ये इजरायली ट्रूप्स इनकर्स करके इन्होंने उस जगह जाके रोड ब्लॉक टाइप लगा दिया है जो गाजा और नीचे की तरफ मेन रोड जाता है। यानी कि उन्होंने ये पूरा इलाके को 2 हिस्सों में काट दिया है। और जैसे मैं पिछले 4-5 दिन से बता के आ रहा हूँ, ऊपर जो है मिलिट्री वॉर हो रहा है, नीचे जो है ह्यूमैनिटेरियन वॉर जारी है। राइट। और ऊपर इन्होंने इसीलिए काट दिया, जो उनका पुराना प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने एक प्लान दिया है। और यानी उन्होंने he wrote an article about it. In that he says, dry the Hamas out, in which he says, okay, you cut off Gaza into two, let all civilians go to the south, and let them go and pull them out to the south, and let Hamas be there. Don't go in and start doing street fighting with Hamas. बस रहो, चाहे 6 महीने लगे या 8 महीने लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको सुखा दो, पानी तक अंदर जाने मत दे, और एक दिन ये बाहर आएंगे। ओके। सो ये इनका प्लान था। लगता है उसी तरीके से जा रहे हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू का टिप्पणी आया है अभी तक, उसके मुताबिक ये लग रहा है कि ये लंबे हदसे का लड़ाई होने वाला है। और जहां तक नॉर्दर्न फ्रंट अलोंग हिजबुल्ला यानी लेबनान के साथ है, वो जारी है, एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। और खास करके जेनिन जो है, ये वेस्ट बैंक में है। आप इसमें देखेंगे वेस्ट बैंक में जहां जहां झड़प हुआ है वो रेड डॉट्स में दिया गया है। और सबसे ऊपर है जेनिन, वो एक रेफ्यूजी कैंप है। और वहां क्या है, इजरायली ट्रूप्स ने पैलेस्टीनियन टेरर लीडर और 3 गनमैन को गिरा दिया है। और क्योंकि वहां रेड हो रहा है,
तो इधर भी कुछ हलचल हो रहा है। तो इजराइल आज के दिन में अगर हम बताएंगे तो ये 3 तरफा युद्ध चल रहा है ऑलरेडी, ठीक, गाजा में, जेनिन में यानी वेस्ट बैंक में, और हिजबुल्लाह के साथ। द डिफरेंस इज द इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशंस इज डिफरेंट, the kind of operations which are going across these three are different, but that we'll see later when certain things come out. So far nothing is known. And what is more, ये जो आज का विषय है ये है कि is the wider war feasible, will West Asia conflagrate? ये देखिए, ये अल जजीरा का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है 4 rockets have been fired at Iraq's Ain al-Assad air base. Iraq में Ain al-Assad air base is occupied by US. So rockets have been fired on that. So the war is being taken there. Don't you think so, Ajay? That already there's a indication of expansion. Sir, I would say it is already not indication. I would say it's already a wider war, sir. Wider war. Now, Yeah. oh yes, Israel has attacked Gaza. It's a full-fledged military operation there. In the north, operations with the Hezbollah shuru ho gaye hai. There have been 109 firing cases in the past 2 weeks, sir. More Yes. cases than that have been there in the since the past 10 years, since the 2006 Lebanon war. That's begun. In the West Bank, sir, an Israeli jet has bombed a compound in a mosque, saying that it was prepared to launch attacks into Israel. Again, Yeah. first time in decades in which a fighter has launched an attack into the West Bank. Yeah. Now, I agree with you. yes, sir. मतलब देखिए sir, Israel is already fighting on 3 fronts: Front. Gaza, Okay. West Bank, and in the north And there is Hezbollah, sir. और ये भी शुरू हो गया है यूएस के साथ। ये US के this is साथ, third. दो sir, तीन हो गए, ये एक लेटेस्ट है, इससे पहले भी 2 हो गए। sir, USA के साथ, sir, USA has fired its first shots of the war. War. Yes. They sent 2 aircraft carrier, अपना Dwight Eisenhower and Gerald Ford. They sent them here. They've got bases. They got 21 attacks on their bases in Iraq and Syria, sir. 21 Syria. attacks. Yeah. Now, they And retaliated. They fired missiles into Syria onto the bases from the places where they said the attacks have taken place. यानी I कि completely agree with you. आंसर एक और चीज तो हमें भूल ही गए थे. Israel has attacked the airport of Aleppo and Damascus. In Syria. Syria. Yeah. Now, can you imagine, sir, they're attacking it because they said they are stopping Iraqi weapons from coming there. But look at the implications of air and missile attacks in different nations. 5 nations across Middle East are already affected. Are already, yes. And So, not only that, मैं बताना चाहता हूँ जो आपने बोला Dwight Eisenhower, that has come into the Gulf and it is coming into that Qatar base. so Qatar का naval base में, and that is Sir. going to be just next to Iran. वो कभी भी Yes. वहाँ it can become a turn into a war Yes. between Iran and क्या बोलते हो? USA. Yeah. So, sir, may I Yeah. paint a dangerous scenario, sir? Just imagine. No, we'll just go through a few of these and then we'll talk. Sure, sir. Right? Okay. Sir. Now that hostage situation is becoming tricky because Sir. Hamas has released videos of Israeli hostages, Sir. and where the hostages बोल रहे हैं कि भाई हमें रिहा करवा दो, right? So ये इजराइल जो है ये लड़ाई मिलिट्री तरीके से कर रहा है और हमास जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से जवाब दे रहा है. सो चाल अलग अलग दिशाओं में से आ रहा है. So this is multi-dimensional in its own manner. Okay. Yes, sir. And then, you know, there's this article आज का इसमें New York Times में, a very slow game, why the pace of Israelis ground operation counts. इसके मुताबिक जितना देर ये धीरे चले उतना ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा. या आप बताइए, आप बोल रहे थे wider thing, you know, this is where it is. Don't you think so? Absolutely, sir. You see, sir, 2 things. एक तो आपने कहा, like,
hostages and the pace of operations. Yes. Now, remember, sir, Israel, one of the biggest concerns are 222 hostages. Now, one thing we must realize that Israel is very sensitive to human life. In 2004, they gave up 1,059 prisoners in exchange for one corporal Gilad Shalit. Only one man, sir, a corporal. Because they're so sensitive, and they have in so many of the prisoner swaps for the remains of their prisoners, they will give hundreds of, or the remains of the soldiers, they will give hundreds of prisoners away. So because as a nation, they're so sensitive to human life. Yeah, I agree with you completely. So Abhi, I look at it this way: so the most delicate operation of theirs is getting their prisoners back, as many of them back to safety. And Yeah, the longer the war goes, the more their lives are at threat. Yeah. The So longer the war goes, yes, sir. The longer it goes, the more images you're going to find of bombed out buildings in Gaza. More is going to the pressure of the Middle East and the other nations for them to stop the war. So they are in a very delicate situation. They have to finish the operation. In fact, I would say the window is 3 weeks. Sir. After that, the world opinion will tilt against Israel. और मेरी तरफ से तो world opinion is already against Israel. There's no. You're right in that. Actually, we'll talk about that. We'll talk about it in the end. World opinion. The point is that also with a second point which I want to make is जो मैं बताना चाहता हूँ अगर जितना लंबा ये कैंच है तो बाकी एक्टर्स भी इसमें आ सकते हैं आएंगे और देखिए ये आर्टिकल बताता है कि ईरान जो है ना वो अभी खेल रहा है इस इलाके में क्योंकि ईरान सपोर्ट्स हौतीस it supports people in Iraq, Shiite, the government in Iraq, then Syria, Lebanon, and Hamas. इनके पूरा मिलिशियास पूरे फैले हुए हैं और ये सब यूएसए के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा और जितना देर ये कैंसर जाएगा राइट तो इसका मतलब धीरे धीरे आते रहेंगे ओके उसके अलावा एक ये this article I saw again in New York Times and of course this has come in many other media pieces also. Yeah. Where a plane with Israelis landed in Dagestan. Dagestan is in Russia. It's in the Islamic part of Russia. And there was a riot when these people came. So, और जगह भी बड़ा कोटरा है ये problem. Sir, okay. Sir, if I may add, sir, एक और incident हुआ था. Sir, in Egypt, a policeman shot at 3 Israeli tourists. He killed one, 2 were badly injured. But this reflects the growing anger which is there across the Arab world, sir. Arab world. And ये जितना देर ये होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा तो ये धीरे धीरे ये फैल रहा है ये okay और economically also there will be a problem because already people are thinking कि ये अगर ये लंबा चले तो oil का भी problem हो सकता है तो ये like you put out in that article आपने अच्छी तरीके से बताया है कि जैसे ये फैलने वाला है और जितना लंबा जाएगा और फैलेगा so this is what as an introduction I wanted to say so I want to hear your thoughts then we will about the wider war. Yes sir, I would agree with you completely in what you said, sir, in the fact that I would put it this way: when Hamas attacked Israel on 7th of October, the 10-7 moment for them, their target was not the 1,000 civilians or Israelis whom they killed. Their target was not those 222 hostages whom they took. Their target was the Israeli response. Because they knew Israel would attack with a vengeance like they usually do. And the more vehement the response, the more it will go against them. And today,
with the Israeli responding so vehemently, I would say Hamas is attained one of the aims of the attack as well, sir. Yeah, I agree with you completely. As Yes, sir. politically, they in the Yeah. yeah. Yes. Okay, Now, right. also, I think, sir, like I said, I'm sorry to sound so callous, but the deaths were collateral damage. The bigger aim was larger. Today, not today, prior 7th October, Israel was in a better position than it has been in the past 70 years. The Abraham Accord was signed, 4 Arab nations that recognize it, UAE, Qatar, Morocco, Sudan, and it was all set for a summit within 3 to 4 weeks. A summit would have taken place between MBS of Saudi Arabia and the Israeli Prime Minister, sir. वो सब पीछे चला गया. It is out of the window. Yeah. And if, like, sir, this I think was a bigger aim. And who benefits most in this? Iran. Because if you also must remember, it is their proxy who launched their attack. Had Saudi Arabia and Israel come together, the entire Middle East equation would have been changed for good. Iran would have been sidelined and it would have gone the Iraq way. So, Yeah. now as the war is creeping, with Iraq being the champion of the Palestinian movement, suddenly the narrative has shifted away from Israel and towards the Palestinian cause, which I think was the underlying aim of these attacks. Yeah, I think you're right. You are very clear that is now very clear. We'll talk of whether Israel had a different option. वो last थोड़ी देर के बाद बात Okay. करेंगे. We'll talk Yes, sir. about it later. Sir, But how do you see this widening? How do you see Why- Iran playing out this out as Sir, we? okay, sir. Okay, sir. Now, this is very interesting. You're looking into a crystal glass is dangerous, but since you've asked me this, I'm going to look into it and see Yeah, do it. what I see in the gloom. One is, sir, one I see very clearly emerging. The Israel actions in Gaza is 100% going to raise its reaction with both Hezbollah and the West Bank. I would say that is a given. West Bank will erupt. They can't attack. Fatah is not strong enough to attack, but it'll erupt and tie down a sizable number of Israeli security forces there. There will be attacks taking place, missile attacks, strike attacks. Hezbollah, sir, they have got an arsenal of 1.5 lakh rockets and rounds. The attacks from the northern front are 100% going to increase. Now, in the I would say a 3-war front is a very likely and a very plausible scenario for Israel. Okay, that is given. Add to this mix the Syrian and the Iraqi Shia militia, who have been nurtured by Iran themselves. Them also opening a front. Now, in this huge volatile mix, remember, say, it takes one spark. If you have an incident with, say, Iran or maybe Syria, in which they also come into the fray. Syria, as even Egypt, I would say. Egypt has been on peace with Israel for a very long time. But President Sisi is under threat. Assuming he feels that now he has to do something to show his standing for the Palestinian people. Then we have the world in a stage of pre-1967, where all the Arab nations have now got together for a Palestinian cause and a 2-state solution, which had been so conveniently pushed under the carpet prior to 7th of October, sir. Yeah, I go with you completely. Now, Sir. how do you see the peace deal between जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पीस डील हुआ था, उसका क्या Yes. फ्यूचर है इसमें? Yes. क्योंकि अगर ये सब हो गया Yes. तो ये काफी हद तक सऊदी अरेबिया का विपरीत भी जा रहा है ये. Yes.
Yes. उसका क्या हालत होगा? क्योंकि देखिए अभी इसमें क्या है, अगर ये सब हो गया तो Sir, ईरान का बोलबाला बढ़ जाएगा इस इलाके में, sir, और ईरान के साथ तुर्की का भी बोलबाला बढ़ जाएगा। yes. तो क्या सऊदी अरेबिया चुप रहेगा? No. Saudi Arabia is the leader of the Islamic world. They have to take a stand, and a stand has to be stronger than Iran. क्योंकि ईरान और सऊदी के बीच में peace deal तो हो गया है. They will not break it, sir, because it suits both parties. But now we may see strange bedfellows. Instead of Israel and Saudi being bedfellows, it could be again Saudi and Iran being bedfellows. And the person Okay. who is then pushed out of the bed is going to be Israel. Israel. So the Iran-Saudi pact may actually strengthen, sir. Because there are other players now. Russia is the support of Iran. Remember, both Saudi and Iran are Iran of course hates USA, but even Saudi is peeved with USA for its actions in the past 5 years, especially the Trump administration, the way they snubbed MBS, their criticism of human rights, the manner in which they have been courted by China and Russia. So both of them may actually come together on this issue, if only temporarily. Okay. How do you see Turkey doing? Turkey का क्या रोल होगा इधर? So Turkey is a NATO member. It is at the moment allied. It has got a formal alliance with USA and the West. So formally, I don't think it would take any action. But informally, politically and diplomatically, their support for the Palestinian cause will increase tremendously. In fact, sir, I will not be very surprised if Turkey proposes peace talks with the broad gambit of a two-state solution being proposed, sir. So you see the two-state solution coming in. Yes, very strongly, sir. It has revived more strongly than any of us ever imagined. Okay. ठीक. So I go with you that Israel will have a three-front war. अभी तो चल ही रहा है, इसमें दो Sir, राय है ही नहीं, और इसमें ईरान का हाथ बढ़ता जाएगा, sir, ईरान का हाथ बढ़ता जाएगा। पर sir. मैं थोड़ा और ये इन सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसका क्या असर होगा? सर अभी देखिए मजा देखिए क्या हो रहा है सर. Yemen also has fired missiles into Israel. Israel. The missiles fired by Yemen by the Houthis, who are sponsored by Iran. They are an Iran militia like the Hamas and Hezbollah. They have now three front. It's a four-front war. Yemen from the south. Remember when Yemen fired the missiles, they were intercepted by the USS Carney, the US, which were the first shots fired by the USA in this war. So, जब आप कहते हो Yemen, that's a very good thing you brought out. Four-front war is now beginning. Now, Iran is beginning. Iran has created what they call an axis of resistance. In the south, नहीं, Yemen. वो आप जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हैं क्रेसेंट. They call correct. So people in the West are calling it a crescent of Axis. terrorism. A crescent of terrorism is being brought in by Iran. Yes. Okay. So हमारा जो नेक्स्ट ये है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच में कुछ होने का अंदेशा है? Not actively, sir. Not overtly. Covertly तो बहुत चल रहा है. Covertly तो होगा. बहुत चल रहा है. But actual war, no. Neither of them will want it, sir. Iran, they are both too powerful. But Iran will remain in the sidelines. They'll keep on giving support. What the fear is, assuming, sir, we all know they are supporting Hamas, Houthis, Hezbollahs, everybody, the Shia military, everybody. They are the people who are feeding the pipeline.
Suppose Israel or USA decide that we must also stop Iran before and stop their support before it gets out of hand. Also, let me take another worst case scenario. They say अगर उन लोग अभी इतना ज्यादा कुछ कर रहे हैं, when they become a nuclear power, and can you imagine what they will be able to do then? चलो अभी मौका है, let's try to launch one strike on the nuclear reactors and finish off the nuclear problem for the next 20 years or so. It is a scenario, I would say, very not a very likely one at this point of time, because it just explodes the whole situation. But it is something which we must consider, sir. So that means जब तक ये लड़ाई चलता रहेगा, इसके चांसेस बढ़ते जाएंगे. जितना चलता रहेगा तो उतने बढ़ते रहेंगे सर, क्योंकि सर, लड़ाई के लिए तो एक ही स्पार्क की जरूरत है. एक और स्पार्क मैं आपको बता दूंगा. जैसे आपने बता दिया, the Eisenhower came right next to the Iranian shores. It was a deterrence. Assuming a missile is fired, maybe not even by Iranian Republican Army, by one of the militia, and it hits a sister ship or whatever, causes minor damages, kills 2 or 3 sailors. How will the US response be then, sir? Yeah, then it's a wider war. Yes. फिर तो लड़ाई तो हो गया शुरू. Yes. Assuming that, sir, समझ लो the Somalian pilots do it. वो भी एक Yes, sir. एक Maverick. आप जानते हो, sir, you know how wars, it takes a spark to ignite a powder keg. Ignite the whole thing. Yes. Yes, so sir. We are sitting on a powder keg and yeah. And sir, जो आपने एग्जांपल दिया बहुत बढ़िया दिया था, पाउडर केक, और दिन ब दिन वो जो फ्यूज है ना सर, छोटा वो छोटा हो रहा है. राइट. ओके. तो ये जो है, ये जो हम आगे देखते जाएंगे, बताने की बात यह है कि ये बहुत नाजुक हालत है. कभी भी ये इट कैन गो इनटू भड़क जाएगा. भड़कने का पूरा आसार है. राइट. इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, आप बताइए. very, very, very interesting question, sir. Abhi to Pakistan, with their own political and economic turmoil, they will first try to get their own act together. But they will 100% start supporting the Palestinian cause, because they traditionally see themselves in the role of the leader, as one of the leaders of the Islamic world. For them, raising the Palestinian issue, they will draw the parallel with the Kashmir issue. Though honestly, sir, there is no parallel. When I say वो तो पता है, but they will draw the parallel, and they will raise that same voices. They will try to raise the same voices in our context as well. So Pakistan to 100% with the Palestinian cause, they will express solidarity, and they will get more and more involved in it and gradually try to get mileage from the Palestinian cause and shift it to Kashmir as well. Yeah, so जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, तो this problem पाकिस्तान क्या है कि ये इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा. Of course. Right. और ये भी चांस है, जो हमने कल जनरल दुष्यंत से बात किया था, जनरल दुष्यंत सिंह से, कि ये पाकिस्तान can also do this kind of an attack on India. Yes. The timing will be different, the scale will be different. Yes. But with some political aim, it has got good chances of doing. That's the point. That's what yesterday we discussed. Yes. So this whole thing can, spread. So it can spread across the wider Muslim world. Okay, let me ask you a question. ठीक है. एक और सवाल पूछता हूँ. क्या इजराइल कुछ और कर सकता था? Sir, yes. Israel कुछ और कर सकता था. Very mature response ले सकता था सब. For example, when I talk about the Israelis, let's draw 2 comparisons. आपने जो article दिखाया था थॉमस फ्रीडमैन का, the Indian, अभी बात करेंगे उसको.
वो बाद में कर, पर इसराइल का सब, मैं आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिए सर. After the Holocaust, after the Munich massacre, they chased each one of the perpetrators. They caught each one, they killed each one. It took them 2 to 3 years, but they did it. They got their revenge. Well, I would not, your revenge is a strong term, they got their retribution. So, had Israel decided to have a moderate response this time, in the sense, only have selective targeting of the Hamas leadership and their weaponry, that would be slower and longer, but there would be none of the images of tanks going in and things like this. It would have would gained, have their come. response would have gained more acceptance in the outside world. Yeah, एक now और we'll चीज, talk of that. yes, बोल sir, बोलिए. एक और चीज मैं बताऊंगा सर. I am an armored corps officer. You know, when I look at the tanks, the Merkavas and Bradley में समझ सकते हो, but look at the Merkavas going in, the first question I ask you is, what are you using tanks here for? तो Just करेंगे क्या because you, वो? yes, you are using them in the most congested area for the messaging, some messaging. A messaging of a tank entering a populated area, it is a drastic message you're sending. You don't need Yeah. it. Commando send command. So I would have actually thought they would only do raids. When they started the raids, I thought they would do small raids. The commando the best in the world. Launch raids, hit, come back. Launch an attack, selective attack of intelligence attack, hit, come back, hit, come back. That's what I thought they would do. But they Yeah. have taken the most extreme options. Step. Okay, so we'll discuss now Thomas Friedman's article. Ah, okay. ओके, देखिए, ये मैं बताना चाहता हूँ, थॉमस फ्रीडमैन ने ये आर्टिकल लिखा है, प्लीज इजराइल डोंट गेट लॉस्ट इन हमास टनल्स. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. जिसने भी ये पढ़ा नहीं है, मैं सबको यही दरखास्त करूंगा कि आप कृपया इसको पढ़िए. और इसमें खास करके इन्होंने लिखा है कि देख, हमारा जब बॉम्बे के ऊपर 26/11 का अटैक हुआ है और इंडियन रेस्पॉन्स टू दैट होल स्टोरी और इजराइल का रेस्पॉन्स टू हमास अटैक उन्होंने कंपेयर किया है. ठीक है, तो एक बड़ा सवाल उठता है. ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरा दिमाग में यह सवाल आ रहा है, क्या इजराइल कुछ और कर सकता था? क्या इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. जब अभी इसे शुरू करने से पहले हम और कर्नल अजय सिंह बात कर रहे थे कि देखिए, जब बॉम्बे का अटैक हुआ था, हमारा सबका खून खौल रहा था. हम सब सोच रहे थे कि अटैक करो, जाके पाकिस्तान को सबक सिखाओ, वो उसको नष्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो. पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया. ठीक. और उस वक्त का प्रधानमंत्री अपना मनमोहन सिंह जी ने बोला कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन. ओके, बहुत लोग इसके ऊपर आलोचना किया. अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि देखिए, उन्होंने 26/11 के बाद कुछ नहीं किया. पर उसका परिणाम जो उन्होंने उस वक्त लिया था, अभी हमें मिल रहा है. और वो अच्छे परिणाम है जो थॉमस फ्रीडमैन ने ये बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है. वो बोलता है वैल्यू ऑफ रिस्ट्रेंट. आई वांट टू रीड दिस आउट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. And when I talk of this, don't think this is for one political party or another. It is not of one leader or the other. You look at the strategic value of this discussion. ठीक है? Rise above yourself. जब तक हम हमारे ऊपर, we don't rise above ourselves, we don't understand what is happening. Okay? He says any military response, ये 26/11 के बारे में बात कर रहे हैं. Any Indian military response would have quickly obscured how outrageous and terrible the raid on Indian civilians and tourists was. देखिए, यही हुआ है. हमास का अटैक बड़ा, the घटना was horrible.
पर अभी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इजराइल का बॉम्बिंग के ऊपर बात हो रहा है। जो हमास ने किया उसके बारे में चर्चा ही नहीं है, सब भूल गए। कुछ लोग बोलते रहते हैं, पर दुनिया में तो सब भूल गए ना। तो ये एक चीज है। तो ये मिलिट्री रेस्पॉन्स अगर हम करते तो बॉम्बे में जो हुआ उसके बारे में सब भूल जाते, पर अभी तो बॉम्बे के बारे में सबके दृश्य दिमाग में है। सब बोलते हैं बॉम्बे के बारे में, सोचते हैं सब पाकिस्तान की ओर देखते हैं। ठीक। Okay, the fact of a terrorist attack from Pakistan and India with official involvement on the Pakistan would have been lost. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें सब ने, पूरा दुनिया ने बोला भाई पाकिस्तान ने अटैक किया, इसको सॉर्ट आउट करो। ये सॉर्ट आउट करते करते अभी काफी दिन हो गया, इसीलिए सॉर्ट आउट हो गया। पाकिस्तान का हालत ये है। अगर ये नहीं होता तो क्या हमास को भी वही कर सकते इजराइल? ठीक है। ओके। और अगर थोड़ा लिटिल कामनेस इफ इजराइल अगर दिखाता तो अभी तक सुई जो है ईरान के ऊपर भी तो चला जाता। सबका everyone's mind would have been against Iran, it would have been against Hezbollah, it would have been against Hamas. Now everyone is against Israel. Okay. A few people thinking no, Israel is right is not the issue. We are talking about the wider world in the real politics. Okay. Once India retaliated, the world would have immediately said just another Pakistan Indian dust up, nothing unusual. बोलता है यार ये दोनों लड़ते रहते हैं, लड़ने दो, खत्म करने दो एक दूसरे को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बॉम्बे में जो हुआ है वो पीछे चला जाता। An Indian attack on Pakistan would have united Pakistan behind the Pakistan army, which was in increasing domestic disrepute. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे तो क्या होगा, पूरा देश पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ा हो जाएगा। ठीक। और ये बात इजराइल ने फौरन अटैक करना शुरू किया और हमास के पीछे पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा हो गया। अब देखिए, राइट, an attack on Pakistan would have also weakened the civilian government in Pakistan and strengthened the army. ठीक हो सकता है अगर हमने उस वक्त अटैक किया कि पाकिस्तान आर्मी ने सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया होता, नवाज शरीफ के गवर्नमेंट को हटा दिया होता और खुद टेक ओवर कर देते, फिर तो हालत हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता लॉन्ग टर्म। अभी ये सब पीछे देख के ये सब साफ हो रहा है। ओके। war, even a successful war, would have imposed costs and set back the progress of the Indian economy just when the world economy in November 2008 was in an unprecedented financial crisis. 2008 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और सबका अर्थव्यवस्था डाउन था, हमारा भी प्रॉब्लम में था। अगर हम उस वक्त लड़ाई में चले जाते, हमारा अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाता। आज का हालत जो स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था है वो ना होता। हाँ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई तो लड़ लेते, पर अभी क्या है, हम एक विश्व गुरु हैं, हम मानते हैं विश्व गुरु। अगर हम उस दिन लड़ाई करते तो आज विश्व गुरु कहने का हमारा साहस भी नहीं होता। ये सोच की बात है। मेरे को पता है बहुत लोग बोलेंगे यार ये बुड्ढा क्या बोल रहा है, इसको क्या, पर सोचो थोड़ा, अपने दिमाग से बाहर आके सोचो। By not attacking Pakistan, India was free to pursue all legal and covert means to achieve its goals of bringing the perpetrators to justice, uniting the international community to force consequences on Pakistan for its behavior. उसके बाद पूरा दुनिया हमारे साथ, आज तक हमारे साथ। ठीक। तो मेरे ख्याल में आप सोचिए, एक आई विल गिव एक आउटलाइन। अगर इजराइल कुछ ना करता तो आज तक हम हमास को कोसते होते, है ना। सब बोलते होते हैं कि भाई हमास शुड बी रिस्पॉन्सिबल। साइमल्टेनियसली Israel could have still done the 3 incursions.
ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये तीनों इनकर्शन करते और जैसे ये मैंने अब ऑल्टरनेट प्लान देखिए, विकल्प है, ऐसी बात नहीं है विकल्प ही नहीं है। इसराइल ने वही करना था जो अभी तक किया है। वो तो थोड़ा, अगर ऐसे काट देते गाजा को बिना एयर बॉम्बिंग के, बिना इसके, बिना उसके, ठीक, और फिर बोलते हैं कि भाई आप सब पीछे जाओ, नीचे जाओ, हम धीरे धीरे अब हमास को सुखा देंगे, क्या कर सकते थे? कर सकते थे। वैसे भी अभी देखिए, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि हम लड़ाई के लिए जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 3 हफ्ता हुआ, अभी तक इनका पूरा स्टार्ट नहीं हुआ। इसी 3 हफ्ते में चुपचाप अपना प्लान बनाओ, उनको बिल्कुल सुखा दो, पानी मत दो, ये मत दो। ये सबको बोलते कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर ऐसे अटैक, घोर अन्याय किया, अटैक किया, पिक्चर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, और गाजा वालों को पानी मत दो, सब कुछ मत दो, और बोलो कि भाई जब तक आप नीचे जाओगे तो खाने मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप जाना शुरू करो। यही, पर जोश जोश में इजराइल ने ये मेरा मानना है। ठीक, अब योर व्यूज ऑन दिस अजय? Totally agree, sir. Totally agree. You see, because जो bombing उन्होंने कहा next दिन उसी दिन they bombed at 10:30 they launched bombing attacks. Did the bombing attacks achieve anything? I don't know. हम दोनों पता है सर, intelligence based strikes are important. अगर ये 3 weeks के बाद ये जो उनका अभी 3-pronged attack जा रहा है, yes, they could have gone now. But without the needless bombing, they would still have been yes. और अभी भी intelligence based raids करो, 1-2 operatives को निकाल दो, 2-3 hostages को निकाल दो, sir. Their planning should have been just this: take them back and project a victory. Even 2 hostages coming back home would be a military victory for them, a psychological victory for them. Maybe capturing Hamas operatives who were responsible for them and parading them on television. That would have been psychological victory. They would have strengthened their case. Now, I too support Israel and its stance, but I also feel they have used a sledgehammer when they could have used a rapier, sir. Yeah, I also feel, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इजराइल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है कि हमास को नष्ट करना है, राइट? इसमें दो राय नहीं, हमास नष्ट होगा ही, नष्ट होगा। मैं ये आज बता रहा हूँ, हम इजराइल ने जो रास्ता अपनाया उससे नष्ट होगा, पर इसमें इजराइल को भी काफी घाटा, महंगा पड़ेगा। इजराइल का भी स्थिति उतना ये नहीं होगा, उनका अर्थव्यवस्था डाउन होगा, उनका बहुत कुछ प्रॉब्लम आएंगे। अब देखते जाइए जैसे जाएंगे। यस, राइट। तो हमने 4 दिन पहले हमने जनरल सक्सेना सा सुना है कि इनका क्या फ्री है रॉकेट्स वगैरह का, ये हिजबुल्लाह और हमास का, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे भड़क रहा है, और ईरान का क्या चाल है, सब कुछ। और बात यह है कि अगर इजराइल इमीडिएट रिएक्शन ना करता तो सहानुभूति और पूरा दुनिया का सहानुभूति इजराइल के साथ होता, और पूरा दुनिया का सहानुभूति इजराइल के साथ होता, फिर इजराइल बोलता कि भाई हम ऐसे करेंगे काम, ठीक, तो हमास का खत्म होना ऑलमोस्ट सर्टन था। और ये पॉलिटिकली भी ये जो अकॉर्ड हो रहा था इजराइल और हाँ, वो कायम रहता है। ठीक, मेरे ख्याल में ये देखेंगे, ये मैंने एक और दृष्टिकोण दिया है आप लोगों को, सो देखते हैं। व्हाट डू यू फील? यस सर, टोटली बिकॉज अगर थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाते थे, they would have got, you see, world opinion sir was completely with them. बस 3 दिन के बाद world opinion switched. So yes, तो देखते हैं। Like I said, sir, the Hamas target was the Israeli response, and in that the Israelis played into their hands. ठीक,
तो ये बात ये है, जैसे मेरे को कोई डाउट नहीं है, वी आई विल ऑलवेज सपोर्ट इजराइल को सपोर्ट course, करना sir. है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका एनालिसिस सही तरीके से ना करें. True. Right. So you have anything else to say, or should we ask questions? No, sir. I think we have covered most of it. I think we should get into the audience now. Yeah, we'll do that.